Hey everyone, this is video number 8 in the series Profit and Loss, a very tricky topic for your examination. From video number 1 to video number 7, we discussed various techniques, shortcuts, tricks. Now, this video onwards, we would be solving some problems for you to have a conceptual clarity, as well as you should also be understanding as to how we should be approaching the problems, right? So let us get started and try to simplify this very first problem over here. Pause the video. Try to solve this question on your own, and if you find your better method than my method, then go in the comment box and let me know this, right? I'm gonna read this problem. It says that Ramakant dealing in bed sheets allows 4% discount on the marked up price. So there is the marked up price, the concept of marked up price and the selling price and the cost price we have discussed in the very first video. It says that at what price must the bed sheets be sold costing 480 rupees. The cost price of the bedsheet has been given to you, making 10% profit, and these are the 4 options. So they are asking you what is going to be the marked up price. You will have to give 4% discount onto the marked up price, and hence you will be selling this at 10% profit. So पहले तो हम यही कर लेते हैं ना. देखो हमारे को सीपी तो दे के रखा हुआ है ना, बड़ा सिंपल से है. सीपी कितना 480 रुपीज़, प्रॉफिट कितना 10%. अच्छा, ये 10% किसका लोगे आप? You have learned in video number 2 and video number 3 that the profit is always calculated onto the cost price. So you will take 10% of this value, 10% of 480. If you simplify this, you will be getting 480 rupees, 48 rupees. So what is going to be the selling price? Selling price is CP plus profit. So which is coming out as 480 प्लस 48 विच इज़ 528. मैंने तो आपको समझाने के लिए ये सारी की सारी लाइंस लिखी है, बट आप एग्जामिनेशन में ये सारी की सारी लाइन नहीं लिखोगे, इनमें से कोई भी नहीं लिखोगे. आप क्या लिखोगे एग्जामिनेशन पे? आप तो एग्जामिनेशन में सीधे ये लिखोगे 480 प्लस 48 विच इज़ 528. ये लाइन आपको लिखनी जरूरी है. प्लीज डोंट वेस्ट योर टाइम राइटिंग इक्वेशंस. सो वंस यू अंडरस्टैंड दिस थिंग, नाउ इट सेज दैट you will have to find out what is going to be the marked up price, right? Let us find out the marked up price here. Say there is this marked up price X, and then you are giving 4% discount onto this marked up price. So what is going to be the selling price? The selling price is going to be what? 96% of X. 96 upon 100x. This technique you learned in video number 4 and 5 of selling price and cost price. And if you simplify this, this is coming out as 24 by 25x. So now you know what is the selling price. Marked up price we need to find out in this problem. We have assumed this to be X. 4% discount has been offered onto this marked up price, and then you will be selling at this price. और ये हमारे को पहले से पता है, 24 by 25x is equal to 528. So what is going to be the value of X? 528 divided by 25 by 22, and if you simplify this thing, 24 not 22, so that's gonna be 22, and this value comes out as 550 rupees. So what is the marked up price? The marked up price is coming out as 550 rupees, which is the option over here, this option. But my proposition is, do you have to solve this? क्या आप ये सब लिखोगे एग्जाम पे? बिल्कुल नहीं लिखोगे. ये सब लिखने की कोई भी जरूरत होनी ही नहीं चाहिए, राइट? द मोमेंट यू कम टू नो दैट योर सेलिंग प्राइस इज 528 रुपीज. अब आपको क्या दिया हुआ? ये 4 प्राइस में से कोई तो एक है मार्क्ड अप प्राइस, इजंट इट? सो रादर देन डूइंग एनी ऑफ दीज स्टेप्स, ये सिर्फ आपका टाइम वेस्ट करेगा. आप सीधे सीधे ऑप्शन पे यहाँ पे चले आओ और उसको एलिमिनेट करने की कोशिश करो. 528 रुपीज़ में बेचना है तो marked up price cannot be 520 rupees. This option is right away, it is discarded. Now look at this option, 650 rupees. If 650 were to be the marked up price, what is going to be 4% onto this? That mental calculation is very much required. If 650 is 100%, if 650 is 100%, that mental calculation is very much required. 100% of a value is 650. So what is going to be 10%? 10.
less from here also. What is going to be 1%? This is going to be 6.50. And if you know 6.50, you don't have to pick up the pen to understand this thing. So you'll have to find out 4% of this value. 4% is what? 6.50 into 4, which is coming out as how much? 26 rupees. So if you subtract 26 rupees from here, will you be getting 528 rupees? No, you are not going to get 528 rupees. So this option is gone. And if you understand what I'm talking about, this option is also gone. So what is that you're left with? You're left with this option. You will have to write only 2 or 3 steps. That is it. If you don't understand my method, probably you will have to write umpteen number of steps. और यहीं पे स्टूडेंट्स बोलते हैं कि प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेटेड था, प्रॉब्लम तो समझ में नहीं आया, ये तो हमसे बहुत देर में हुआ. नहीं, ऐसा नहीं है, आपने अपनी टेक्निक्स गलत लगा दी वहाँ पे. तो अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट की बड़ी जरूरी है, साथ में ये भी बड़ा जरूरी है कि आप कौन कौन से स्टेप्स वहाँ पे एग्जामिनेशन पे लिख के आओगे, राइट? So if you understand this thing, let us try to solve this problem out here. Pause the video, solve this question on your own. See if you can solve this problem. It says that cost price of 2 watches, collectively it is 840 rupees. तो जैसे ही ये प्रॉब्लम बोलेगा ना, तो मैं तो अपने दिमाग में पहली वाली घंटी क्या बजती है पता है, कि इन चारों ऑप्शंस में से ये देखूं कि कहाँ पे जो सम है इन चारों का वो 840 रुपीज आ रहा है. एग्जामिनेशन में कभी कभी हो सकता है कि कोई एक ऐसा ऑप्शन हो जहां पे वो सम ही 840 रुपीज ना हो, फिर वो तो ऑप्शन ऐसे ही चला गया. बट यहाँ पे बदनसीबी से हमारे सारे के सारे ऑप्शंस में जो सम आ रहा है वो 840 रुपीज आ रहा है. अब क्या करेंगे यहाँ पे? सो आई विल टेक दिस, आई विल टेक वॉच नंबर 1. I am assuming this is for X rupees, okay? And watch number 2, say the price of watch number 2 is 840 rupees minus X rupees. Now there are people who will take X and Y, A and B. If you deal with 2 variables, so you will have to make 2 equations, फिर वहाँ पे आपका space जाएगा. So I am assuming that the cost price of the first watch is this, and the cost price of the second watch is this. And the problem tells me that one is being sold at 16% profit. So one is being at 16% profit. So this is going to be what? 16% of X. And what is going to be the second value? It is going to be 12% of 840 minus X. So this is loss onto this value, and this is the profit onto this value, and these two are nothing but same. And if you equate them, would you be able to find out what is going to be the value of X? जैसे ये निकल गया, ये वाली प्राइस निकल के आ जाएगी. So now what is this? 16 into X, because what is the meaning of percentage divided by 100 from both of the sides? They are cancelled. That understanding is also very much required. So this is 840 negative X. If you simplify 4 into 4, 4 into 3, so this is 4X is equal to 3 into 840 negative 3x. 3x gone on to that side. This is 7x is equal to 3 into 840. Simplify the value. See if you can find it out. So this value is coming out as, this is x comes out as 360, and if this is 360, this value certainly is going to be 840 minus 360. What is the option? What is the option? This is the option. Is that okay? Do we understand this thing? So एक तो ये हो गया कि भाई ये इतने सारे स्टेप हो गए. एक जो मेथड है एलिगेशन का, probably आपने वो सीख के रखा होगा. And allegation is something which is very very crucial if you are preparing for any management examination like CAT and ZAT or SSC or bank PO. ये PO problems को बड़ा simplify कर देता है. So I'm gonna solve this problem using that method, assuming that you know what is how to simplify problems by using mixture method. Now the first watch is being sold at 16% profit, okay? So first watch is being sold at 16% profit, and the second watch is being sold at 12% loss, and collectively there is no profit and no loss percent. So what is that I'm going to do? So you must have studied in mixture and allegation. If you have not studied, go and watch those videos. So this value will have to be bigger than 1 and the smaller than 1. यहाँ पे क्या लिखेंगे? Bigger value minus this value. So this is 16 minus 0, and over here since 0 is bigger than this value, so 0 minus 12. So this value comes out as 12, this value comes out as 16. What does that mean? What does that mean?
So this is nothing but 3:4. So the cost prices of these two watches must be in 3:4 ratio. Price of the first watch will be 3/7. So a basics of ratio is also required. So this is 3, and 3 plus 4 divided by 7, and this value will be what? 4 divided by 7. So 3/7 and 4/7 of what? 3/7 of the total price. And in this situation we have been given this is 840, and this is what? 840. So if you simplify this, this is 120. 120 into 3, 120 into 4. Now you are having your answer, which is 360 and 480. Choice is all yours. अगर मेरे को एग्जामिनेशन पे करना होगा तो मैं इस वाले मेथड से बेटर इस वाले मेथड को यूज करना समझूंगा. मेरे स्टेप्स बच रहे हैं, जहां पे मेरे स्टेप्स बच जाए, जहां पे मेरे को लिखना कम पड़ जाए, वही मेथड मेरे लिए सबसे अच्छा मेथड है. सो यू लर्न how to solve this problem by using two methods. Now another one, there could be third method, you know, there could be a third method to simplify this problem. Understand that third method. What I'm gonna do, this is how probably I would start thinking. I would say that 16% of a value of value 1, right, and then loss is what? 12% of value 2. So this is the profit on the first watch, this is loss on the second watch, and problem says that these two must be the same. And if this value is 16% and this value is 12% and they are equated, obviously the value number 1 will have to be less than value number 2. By 16% किसी smaller value का बड़ा होगा 12% ऑफ अ बिगर वैल्यू, तभी तो आपकी बात बनेगी. तो इसका मतलब एक तो चीज आपको ये क्लियर होनी चाहिए वहां पे, दैट द प्राइस कॉस्ट प्राइस ऑफ द फर्स्ट वॉच विल हैव टू बी लेस देन कॉस्ट प्राइस ऑफ द सेकंड वॉच. अब ये यहाँ पे कहाँ पे बात बन गई? यहाँ पे देखो, इन तीन के तीनों ऑप्शंस में ये बात हो रही है. ऑप्शन बी इज एलिमिनेटेड, ऑप्शन ए, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, ये यहाँ पे हो रहा है. तो अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा? एक तो ये मैंने एलिमिनेट कर दिया. यू अंडरस्टैंड दिस? सो व्हाट डिड आई से? 16% ऑफ अ वैल्यू विल हैव टू बी equal to 12% of the second value. Obviously second value will have to be bigger than the first value. Now if this is the scenario, I will say this is what? 16 times of v1, value 1, is equal to 12 times of value 2, and if you simplify, this is 4 times of value 1 is equal to this value 3 times. So value 1 divided by value 2 is coming out as 3/4. Now I'll look at this option and I'll say that these two must be in the ratio of 3:4. Where do I have values in the ratio of 3:4? ये नहीं है, ये नहीं है. Which option is this? First option. It is gone. I hope you're getting so you must be able to solve one problem by using a 360-degree approach. जहां से भी अपने स्टेप बच जाए वो अच्छा है. चलो जी, if you understand this one, try to solve this one. मैं तो पिछला वाला मेथड क्वेश्चन आपके लिए 2-3 मेथड से करने की कोशिश करी थी. आप देखो आप इस क्वेश्चन को कैसे सिंप्लीफाई करोगे, क्योंकि ये क्वेश्चन अगर आपने गलत टेक्निक से लगाई वो आराम से 5 मिनट जाएंगे, आराम से 2 पेजेस जाएंगे और कुछ भी नहीं हो पाएगा हमारा. सो व्हाट इज दैट वी शुड बी डूइंग? पहले तो मेरी बड़ी इच्छा है कि मैं इस प्रॉब्लम को ना बड़े वाले तरीके से लगा के दिखाऊं आपको. मैं लगाऊंगा नहीं, बीच में मैं रुक जाऊंगा, वो सोल्यूशन आप ही निकालोगे. तो प्रॉब्लम क्या बोलता है कि 4 horses and now 9 cows are being sold at 13,400 rupees. So we'll take price of 1 horse as H and price of 1 cow as C. So the collective prices of 4 horses and 9 cows is given to you as 13,400. Is that okay? लोगों को लगेगा कि ये तो बड़ा सही कर रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप जा रहे हैं, कुछ तो मिलेगा उनको. And it says that if horses are being sold at 10% profit, so एक horse को अगर 10% profit पे बेचोगे तो उसकी प्राइस कितनी निकल के आएगी? 1.10 H निकल के आएगी. क्या ये आपने सीखा वीडियो नंबर 3 and 4 में? You have got the cost price H. If it is being sold at 10% profit, what did I tell you? In the numerator you will add 10 in 100 and denominator will remain 100. So this value will become what?
11 by 10 H, that comes out as this value. So 4 times of this plus, because cows are being sold at 20% profit, price of one cow will become 1.20 C. How am I getting 1.20 C? It is 120 by 100. If profit is 10%, it is 110 by 100. If profit is 20%, it is going to be 120 by 100. And there are 9 cows. And then it says that it has to be 13,400 plus 1880. एक तो ये हो गया. Now what is that we should be doing? This equation is 4.4H plus 10.80 C is equal to these values. So this is going to be 80. So this much. So this is your third equation. And what is that you have to find out? You have to find out what is the cost price of horses. If you have to find out cost price of horses, what is that you should be doing? कहीं ना कहीं से cow eliminate हो जाए इस इक्वेशन से. यही तो आपने सीखा हुआ है. तो आप क्या करते हो? आप इस वाले इक्वेशन के this 9 will have to become 10.8 by doing what? By multiplying this entire equation by 1.2. Only then you can do that, right? So this equation becomes what? 4.80 H plus 10.8 C is equal to 13,400 into 1.20. And if you, because this equation is obviously bigger than the first the third one, so the third equation will have to be subtracted from this and this. This is what you have learned, right? ये गया. आपके पास क्या बचा? 0.40 H. Now this value is coming out as what? 14,280 into 13,400. Now we have to simplify this. So 13,400 and then 0.20, so 0.10 is going to be how much? This is going to be 862. This is gonna be 13,680. ऐसे दैट लोगों को लग रहा है ना कि ये प्रॉब्लम वो सिंप्लीफाई कर पा रहे हैं. यहाँ से क्या बनेगा उनका? यहाँ से प्रॉब्लम गड़बड़ हो गया. मैं तो खुद ही गड़बड़ कर गया. देखो ये कैलकुलेशन गलत है जो मैंने लास्ट में करी है. आप देखो, अगर आप इस तरीके से प्रॉब्लम को अगर आप अप्रोच कर रहे हो ना, तो प्रॉब्लम छोड़ के चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है. आप इतने सारे स्टेप्स में तो ये प्रॉब्लम नहीं कर सकते, राइट? अगर आप यहाँ पे इसको सही तरीके से करोगे तो आंसर देगा, ये मेथड पक्का आंसर देगा. बट आई एम नॉट गोना डू दैट विद दिस मेथड. सो व्हाट इज माय मेथड टू सिंप्लीफाई दिस प्रॉब्लम? व्हाट शुड बी माय मेथड टू सिंप्लीफाई दिस प्रॉब्लम? माय मेथड इज गोइंग टू बी दिस. I say that okay, there are options. I'm gonna use these options. My first option says that the price of one horse is coming out as 1,000 rupees. So what is going to be price of 4 horses? It is 4,000 rupees. So collective price is what? 13,400, the collective cost price. Out of this, 4,000 will be subtracted, and then I'm going to be getting 9,400. So what is this 9,400? 9,400 is going to be collective price of 9 cows. It is going to be collective price of 9 cows, isn't it? 9 cows की price हो गई है. In the second situation, if the cost price of one horse is 2,500 rupees, cost prices of 4 horses is coming out as 2,500 into 4, 10,000, and this one will be 3,400, which is going to be collective price of 9 cows. Now probably you understand what I am doing. 13,400 minus 2,000, the option number B. So this is 8,000, which is coming out as 5,400, and in the fourth option it is 12,000. How am I getting 12,000? Because price of one horse is 3,000, so price of 4 horses will become 3,000 into 4, which is 12,000, and this one comes out as this much. यहाँ से मैं करना क्या चाहता हूँ? मैं करना ये चाहता हूँ, ध्यान से देखना. Now you know the divisibility rule of 9.
If you have not seen those divisibility rule videos in number system playlist, please go and watch them. They are very important, and this is where we have discussed about divisibility rule of each and every number. So what is going to be the divisibility rule of 9? Sum of digits must be divisible by 9, right? Which option? This option is gone, this option is gone, and this option is gone. So what is that you're left with? What is that you're left with? 5400 is the only number which is divisible by 9. ये ऑप्शन गया और आपके पास में आंसर क्या आ गया? बी आंसर आ गया, काम खत्म हो गया आपका. बिकॉज प्राइस ऑफ 4 horses, if it is 8000, price of 1 horse is 2000. That's absolutely correct. I hope you're understanding what I'm trying to talk about. उतना जो पिछला वाला लगा रहे थे उसमें आप कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाते. अब यही प्रॉब्लम जब मैंने इस तरीके से लगाने की कोशिश करी तो आपको सिंपल लग रहा है. तो व्हाट इज दैट आई एम ट्राइंग टू से? लर्न, रीड द प्रॉब्लम, रीड द ऑप्शंस, रीड द प्रॉब्लम, रीड द ऑप्शंस, ट्राई टू एलिमिनेट सम ऑप्शंस. दैट इज व्हाट इज डिजायर्ड. ओके, नाउ let us read and let us try to solve this problem out here now. Amit bought 2 articles A and B at a total cost of 8000. He sold article A at 20% profit and B at 12% loss. In the whole transaction, now you must be understanding that 2 things are being mixed, so you can apply the mixture method. So I'm gonna use these 2 methods. Article A, say the cost price of article A is X rupees, and the cost price of article B, I am taking it as 8000 minus X rupees. And the problem also tells me that on A you are making 20% profit. So 20% profit is going to be how much? 20% of X is profit, and over here you have got 12% loss. So 12% of 8000 negative X. So this is the profit on the first item and this is the loss on the second item. If there will have to be a situation of no profit, no loss, this profit and this loss must be equal. And if you do that, you will have the value of X. And if you do this, so this is going to be your 20x, percentage and percentage, they will get cancelled. So this is 12, 8000 minus X. If you simplify, this is what? 5x is equal to 3 times 8000 minus X. So if you simplify this further, this is going to be how much? 5x is equal to 3x, 3 into 8000 minus 3x. So this is going to be what? 8x is equal to 3 into this value. Simplify करके देख लो. What is the value of X? The value of X is coming out as 3000. So what is the price of the first item? The price of the first item comes out as 3000 and hence the price of the second item will become 5000. एक तो इस वाले मेथड से जब आप निकालोगे ना, मैंने क्या बोला, 2 वेरिएबल मत लो, काम खत्म होगा. बट 2 वेरिएबल नहीं भी लिया तब भी 1 2 3 4 5 6 इतने स्टेप तो लग ही रहे हैं. अगर आपने एलिगेशन वाला मेथड यूज कर दिया तो इतने सारे स्टेप भी लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको. वो एलिगेशन वाला मेथड कैसे लगा सकते हो आप? Now what you can say, on one item you're having a loss of 12% and then you're having 20% profit on the second item. Collectively you're having no profit and no loss. So 20 minus 0 is 20 and 0 minus 12, 0 minus 12. So what is this? 20 is to 12 and 20 is to 12. If you simplify, this is going to be what? 4 is to 5 is to 3. So the prices must be in the ratio of 5 is to 3, and if the prices must be in the ratio of 5 is to 3, आप बड़ी आसानी से निकाल सकते हो. Because if it is 5 is to 3, the item which was being sold at loss was 5 by 8 of 8000, and the item which was being sold at profit was 3 by 8 of 8000. So this one comes out as 5000, this one comes out as 3000, and I say that choice is all yours. Choice is all yours. आप किस वाले मेथड से करना चाहते हो आप डिसाइड करो, राइट? बट आप जब सीखते जाओगे, प्रॉब्लम्स लगाते जाओगे, तो यू विल रियलाइज दैट मिक्सचर मेथड इज बेटर देन दैट ऑफ द अदर मेथड. नाउ व्हाट इज द प्रॉब्लम आउट हियर? ये प्रॉब्लम है ही नहीं जो हम अभी तक लगाने की कोशिश कर रहे हैं. अभी तक तो हमने ए और बी की कॉस्ट प्राइसेस निकाल ली है, यही है ना.
अब वो कह रहा है कि मेरे को बी को कितने परसेंट प्रॉफिट पे बेच दो। ए CP of A is 3000 and selling price of A will have to be, because A is being sold at 20% profit, and what is 20% profit of this? 20% of profit is going to be 600, so selling price will come out as 3600 rupees, and then you will have to make a total profit of 25%. 25% किसका बनाओगे आप? 8000 का। भाई कलेक्टिव कॉस्ट प्राइस इज 8000 and if you want to make an overall profit of 25%, that 25% profit will have to be made onto 8000 rupees. So what is 25% of 8000? ये सारी की सारी ना मेंटल कैलकुलेशन करना सीख लो आप लोग। 1/4 of 8000, क्योंकि कई सारे लोग आके ना ये बोलते हैं कि आप ना बड़ी तेजी से प्रॉब्लम लगा रहे हो। भाई ये तो कॉन्सेप्ट तो खत्म हो चुका ना, मैं तो कॉन्सेप्ट में धीरे धीरे जाऊंगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग में तो बिल्कुल ऐसे ही जाऊंगा जैसे आप एग्जामिनेशन पे लगाना चाहते हो, इजंट इट? स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे करने लगा तो फिर तो मुसीबत हो जाएगी। आपको बनाना है 2000 रुपीज़ का प्रॉफिट, यही है ना? यानी आपका जो कलेक्टिव सेलिंग प्राइस होना चाहिए वो कलेक्टिव सेलिंग प्राइस होना चाहिए 8000 रुपीज़ प्लस 2000 रुपीज़। सो द कलेक्टिव सेलिंग प्राइस विल हैव टू बी 10,000 रुपीज़, इजंट इट? Collective selling price will have to be 10,000 rupees, and item number 1 has been sold at 3,600 rupees. So what is going to be the selling price of the second item? So 10,000 में से ही तो आप क्या कर दो, 3,600 रुपीज सब्सट्रैक्ट कर दो, and you will have the value 6,400. आ गया ना ये? What did I say? 25% of 8,000 will be found out. 2,000 rupees will be profit. So collectively these two items will be sold at 10,000 rupees. Item number 1, the cost price of item number, you found out that this is 3,000 rupees, and then we are making 20% profit on item number A, item A. So the profit is 600 rupees onto 3,000 rupees. So selling price of the first item is 3,600 rupees, और दोनों का कंबाइंड 10,000 रुपीज है, तो आप दूसरे वाले का बड़ी आसानी से निकाल सकते हो, आपका काम चल गया। The last problem, and it seems to be a very simple problem. लगा के देख लो आप इसको, लगता है कि ये बड़ा सिंपल है भाई, आप क्या कर देंगे, मुश्किल हो जाता है लोगों को करने के लिए। If the selling price is doubled, then the profit is doubled. Find the profit percentage. अगर किसी के सेलिंग प्राइस को दुगना कर दो ना तो प्रॉफिट 3 गुना हो जाता है, वो यही कह रहा है यहाँ पे। और आपसे वो क्या निकालना चाहता है, वो कहना चाहता है कि भाई आप प्रॉफिट का परसेंटेज निकाल दो। एंड आई से दैट ओके, वी नो फॉर श्योर दैट सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, है ना भाई? एंड से दैट इफ यू डबल द सेलिंग प्राइस, अगर सेलिंग प्राइस डबल कर दिया तो कॉस्ट प्राइस तो फिर भी सेम रहेगा ना। कॉस्ट प्राइस कहाँ से चेंज होने वाला है भाई? जितने का खरीदा था वो तो उतने का ही है। सो 2 टाइम्स ऑफ सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ, सो दिस इज गोइंग टू बी, एक तो इक्वेशन ऐसे लगा लो जो ये कहना चाहता है, पहले तो हम वही लिख लेते हैं। 2 टाइम्स ऑफ सेलिंग प्राइस एंड से दैट कॉस्ट प्राइस इज नॉट चेंजिंग and previously the profit was 3, now it has become 3 times of P. That is what the problem says. The profit triples, and you know you have to find out the profit percentage, and if you find out profit percentage, there's no need of having selling price here. भाई प्रॉफिट परसेंटेज हमेशा किस पे निकालते हैं? कॉस्ट प्राइस पे निकालते हैं। तो मैं कह रहा हूँ चलो आप इसको ऐसे लगा लो, ये वीडियो नंबर 4 या 5 में आपने सीखा हुआ है। So 2 times of cost price plus 2 times of profit is equal to cost price plus 3 times of profit. ये क्वेश्चन आपने सीखा होगा, इसको इधर लेके आ जाओ। तो इधर से CP is equal to profit, यानी जितना प्रॉफिट क्या है CP के बराबर है। तो आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर तो होनी चाहिए अब तक कि जो प्रॉफिट बनेगा वो 100% ही तो बनेगा। आपने कैसे निकाला इसको? अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आई ये वाली बात, आप क्या कर दो, how do you find out profit percentage? Profit upon CP into 100. How much is the profit? Profit and CP, both of them are the same as per this problem. काम हो गया ख़त्म 100%। बट आप ऐसे कर लो तो ये और भी आसान है, काम ख़त्म हो गया आपका, राइट? सो one thing that you need to understand कि प्रॉफिट एंड लॉस डिफिकल्ट होता क्यों है लोगों के लिए। एक कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है जो हमने वीडियो नंबर 1 से वीडियो नंबर 7 के बीच में जनरेट करने की कोशिश करी। दूसरा, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होने के बाद में भी वो इलॉन्गेटेड मेथड से जाना चाहते हैं।
वही तो एग्जामिनेशन करवाना चाहता है आपसे। अगर आप लंबे मेथड से जा रहे हो ना, तो आप एग्जाम का पर्पस सॉल्व कर रहे हो, आप अपना पर्पस सॉल्व नहीं कर रहे हो। आपका पर्पस तो तभी सॉल्व हो जब आप बिल्कुल सिंप्लीफाइड तरीके से क्वेश्चन को लगा लो। तो ऑप्शन, व्हाट डिड आई से, ऑप्शन एलिमिनेशन कुड आल्सो बी पॉन्डर्ड ओवर। सो आज से आप एक चीज सीखो कि प्रॉब्लम पढ़ो, साथ में उसके बाद उसके ऑप्शंस भी पढ़ना सीखो, एलिमिनेट करना सीखो, एंड दैट इज गोइंग टू बी बेटर। और हमारे यहाँ पे तो हम स्टेप बाय स्टेप के तो नंबर हमारे मिलने वाला नहीं है किसी भी एग्जाम पे, आपको तो सही है गलत के आंसर मिलने वाले हैं। इज दैट ओके? सो दिस इज व्हाट आई हैड इन दिस वीडियो। इन द नेक्स्ट वीडियो आई एम गोइंग टू बी टॉकिंग अबाउट हाउ टू फॉर्म इक्वेशंस। चलो इन सब से काम नहीं बना तो हम इक्वेशन बनाने की जरूरत ही पड़ गई, तो हमारे को कौन सा इक्वेशन बनाना चाहिए, कैसे एलिमिनेशन करना चाहिए, ये सारी चीजें वी वुड बी डिस्कसिंग इन द नेक्स्ट वीडियो। सो दिस वीडियो and the video number 9, they are very helpful for your all the examinations but CAT के लिए थोड़ा सा और बेटर हमारे को होना पड़ेगा, जो हमारे को वीडियो नंबर 10 and 11 में मिल जाएगा, राइट? सो दिस इज व्हाट आई हैड इन दिस वन। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वन।